A very fine and pleasant good morning to you all. Today we are gathered here to celebrate our 75th Independence Day. Before 1947, we were under the control of British rule, and it was a kind of lockdown. And we got freedom from the great works of the freedom fighters. Now, in 2021, we are under the control of virus, and it's our responsibility to fight against the virus and make our country free from this. Respected Principal, Reverend Sister Catherine, Manager Sister Maria Mamute, Vice Principal Sister Shirley, Administrator Sister Lali, teachers, non-teaching staffs, and my dear friends. Today, on this occasion of the 75th Independence Day celebration, I extend my warm greetings to you all. On this day, our India has become independent, and our dream of living in an independent country has become true. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुल बोलेंगे इसकी, ये गुलसित हमारा. Prayers are talking to the God, the Almighty, the Creator of the universe. So let's hold our hands for the prayer. God, on the day we celebrate our nation's birth, we place our faith in you. You are the one who gives us freedom. You have endowed us with inalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. And may we pursue with the passion that you first pursued us. As we celebrate our great nation, we remember the sacrifices and the turmoil that this country was born out, and that continues to shape us today. We know that you are not done here. We know that we are far from perfect, and we know that you have a plan. We pause to remember that you are our God and we are
the people of your pasture. Help our country turn toward you. Bring revival to this nation. Give our leaders clean vision and sober minds. Bring peace and justice to our school. And unite us all as brothers and sisters. God, we ask that your kingdom would come and come quickly. May peace and prosperity come to your children living in the land of free and the home of the brave. Amen. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops down the are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops down the are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. Let's dedicate the Independence Day to the Son of the Nations. Now, I would like to call our Honorable Principal, Reverend Sister Catherine, for the auspicious flag-waving ceremony as a tribute to our motherland. I would like to call our Principal, Reverend Sister Catherine, to deliver an Independence Day message. Good morning, respected sisters, teachers, parents, and my dear students. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is the national festival of India, observed on 15th of August, and we celebrate it with great enthusiasm and patriotism. This year, we celebrate our 75th Independence Day. This day is the most important day for all of us. Hindus celebrate Diwali, Muslims celebrate Eid, Christians celebrate Christmas, but all religions in India should celebrate the Independence Day together because it is our national celebration. Though we are unable to gather together to celebrate this great festival, I invite you all to give honor and respect to our great warriors and freedom fighters who sacrificed their lives. The peaceful life that we are living today is just because of their sacrifices. So let us remember all the great patriots who sacrificed their lives so that we may live in a free land. In the end, I would like to say that let us all work together
and make our country the best country in the world. What we have achieved is the political freedom, and what we need is economic growth and ethical nation. Time has come for all of us to ask ourselves what we can give to our nation. On this Independence Day, let us resolve to give something unique to our nation. What all the precious things we can give to our nation? We all join our hands together to make our country more beautiful. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Sister Catherine, for your valuable words and aspirations. Now it's time to tell you, breathe for the wonderful dance performance by our friends. Yes, we dance for laughter, we dance for fear, and we dance for banners, and we dance for cheers. But today, we dance for the glorious nation. So let's have a look on it. First, I welcome Nihara of class 3rd with a wonderful dance performance. Thank you, Nihara, for your performance. Next, we have Devana of class 3rd with another great performance.
Neha of class 4 with another dance performance. Yes, thank you, Reha. Next, we have mind-blowing performance from our little ones. Happy Independence Day all! ये देश है वीर जवानों का बेलों का मस्तानों का इस देश का यारो इस देश का यारो क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना मेरा झुका है जापानी बदलू हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा झुका है जापानी बदलू हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिया है जान भी दे ऐ वतन तेरे लिए
patriotic song. Patriotic song has the inherent quality of mixing up love and respect for the country. So now we have Julia of class 3rd with such a song. ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം നമ്മളാം ജനകോടി തൻ അമ്മയാക്കിയ ഭാരതം ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം തലയിൽ മഞ്ഞണി മാമല ചൂടിയ തങ്ക കിരീടവും ഉടലിൽ സസ്യശ്യാമള ശാന്തല കോമല കഞ്ചുകവും കഴുത്തിൽ നാനാ നദികൾ ചാർത്തിയ പൊന്മണിമാലകളും കാണുക കാണുക ജന്മഭൂമി കോമളമലർമേനി ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം ജ്ഞാനാഭാഷകൾ അമൃതം പൊഴിയും നാവും പുഞ്ചിരിയും നാനാദേശക്കാരുടെ നാനാ ദേശത്തിനൊളിയും വീരപുരാതന സംസ്കാരത്തിൻ വേരോടും മണ്ണും പാരിൽ ശാന്തി വളർത്തും ഹൃദ്യൻ അമ്മ തന്നെ നേട്ടം ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം നമ്മളാം ജനകോടി തൻ അമ്മയാക്കിയ ഭാരതം ജന്മകാരിണി ഭാരതം കർമ്മമേദിനി ഭാരതം. Thank you, Julia. This song invokes love and passion for motherland. Now I call upon Sai Kiran of class 3rd with the Malayalam patriotic song. സദസ്സിന് നമസ്കാരം. എന്റെ പേര് സായി കിരൺ. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, ടീച്ചേഴ്സ്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കവിയുമായ അംശി നാരായണ പിള്ളയുടെ വരിക വരിക സഹചര്യ എന്ന ഗാനമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പാടാൻ പോകുന്നത്. വരിക വരിക സഹചര്യ സഹന സമര സമയമായി കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്ത് കാൽനടയ്ക്ക് പോകുന്ന വരിക വരിക സഹചര്യ സഹന സമര സമയമായി കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്തു കാൽനടയ്ക്ക് പോകുന്ന ബ്രിട്ടനെ വിരട്ടുവിൻ ചട്ടമൊക്കെ മാറ്റുവിൻ ദുഷ്ടനീതി വിഷ്കഭത്തിലൊട്ടുമേ നിലച്ചിടാം ബ്രിട്ടനെ വിരട്ടുവിൻ ചട്ടമൊക്കെ മാറ്റുവിൻ ദുഷ്ടനീതി വിഷ്ടവത്തിലൊട്ടുമേ നിലച്ചിടാം എത്ര നാളിങ്ങടിമയായി കിടക്കണം സഖാക്കളെ പുത്രപൗത്രരെങ്കിലും സ്വതന്ത്രരായി വരേണ്ടയോ എത്ര നാളിങ്ങടിമയായി കിടക്കണം സഖാക്കളെ പുത്രപൗത്രരെങ്കിലും സ്വതന്ത്രരായി വരേണ്ടയോ ഗതഭയം ജരിക്കണം ഗരുഡ തുല്യ വേഗരായി സഹഗമിക്ക 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 ധീരരെ ധീരരേ ധീരരേ വരിക വരിക സഹചരേ സഹന സമര സമയമായി കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്ത് കാൽനടയ്ക്ക് പോകണം എത്ര പേർ രണത്തിലാണ്ട് വൃത്തിവേറ്റിടുന്നു നാം തത്ര ചെന്നു സത്യയുദ്ധമിക്ഷണം ജയിക്കണം എത്ര പേർ രണത്തിലാണ്ട് മൃത്യുവേറ്റിടുന്നു നാം തത്ര ചെന്നു സത്യയുദ്ധമിക്ഷണം ജയിക്കണം വെടികളിടികൾ അടികളൊക്കെ വന്നു മേത്തു കൊള്ളുകിൽ കൊടി തുടച്ചു ചിരി ചിരിച്ചു മാറുകാട്ടി നിൽക്കണം ധീരരേ ധീരരേ ശക്തിയില്ല തോക്കുമില്ല എങ്കിലും കരങ്ങളിൽ രക്തമുള്ള നാൾ വരെ നമുക്ക് യുദ്ധമാടണം രക്തമുള്ള നാൾ വരെ നമുക്ക് യുദ്ധമാടണം തത്ര തോക്കും കുന്തമീട്ടിയൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ശത്രു തോറ്റു മണ്ടിടുന്നതെത്രയെത്ര അത്ഭുതം ധീരരേ ധീരരേ വരിക വരിക സഹചരേ സഹന സമര സമയമായി കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്ത് കാൽനടയ്ക്ക് പോകണം കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്ത് കാൽനടയ്ക്ക് പോകണം തീയ പുലയരാതിയായ സാധു ജനതയെ ബലൽ തീയ പുലയരാതിയായ സാധു ജനതയെ ബലൽ തീയിലിട്ടു വാട്ടിടുന്ന ദുഷ്ടരോട് തീർക്കണം തീയിലിട്ടു വാട്ടിടുന്ന
തീർക്കണം. വിജയമെങ്കിൽ വിജയവും മരണമെങ്കിൽ മരണവും ഭയവിഹീനം അഖില ജനവും ആഗ്രഹിച്ചിറങ്ങണം. ധീരരേ ധീരരേ വരിക വരിക സഹജരേ, സഹന സമര സമയമായി കരളുറച്ചു. Thank you, Sai Kiran, for making us proud. Now, here comes Pranida Rajiv of class 3rd with a cute little performance. नमस्ते, मेरा नाम प्रणीता राजे। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। Thank you, Pranida. That was our Little Charms with Little Lovely performance. Now, let us look at higher section of patriotic song. So, I would like to call Joanna of class 10 with a patriotic song. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन. इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन. ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन. ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन. इसने मिट्टी से बनी तेरे मेरे वतन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते के गगन. इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन. इसकी वास्ते निसार है मेरा तन मेरे मन. ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन. अपने इस चमक को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोने कोने अपने देश का सजाएंगे. जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन. इस निवास तेरी सार है मेरा तन मेरा मन. ए वतन ए. Thank you, Joanna, for praising our country and for presenting this song. मेरा देश मेरा मुल्क मेरे ये वतन. Yes, such an amazing song. Now, here comes Nivedya of class 9 with the patriotic song. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन,
शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये वतन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन जीने का चलन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। Thank you, Nivedya. You filled the atmosphere with freedom and sacrifice. Now we have Ashna Sunil with a patriotic song. My name is Ashna Sunil and I'm studying in 10th standard. ये वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ये वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है जहान रूह जहाँ में याद रहे तो, है जहान रूह जहाँ में याद रहे तो। ये वतन मेरे वतन, ये वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, पहजू में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहजू में जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ये वतन मेरे वतन, ये वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई हम के आज आने लगे तू, तुझ पे कोई हम के आज आने लगे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद लगे तू, कुर्बान मेरे जान तुझ पे शान लगे तू। ये वतन वतन मेरे आबाद लगे तू, है जहान रूह जहाँ में याद रहे तू। ये वतन मेरे वतन, ये वतन मेरे वतन, लब पे आती है दुआ के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्क सूरत हो खुदाया मेरे, जिंदगी शम्क होरत हो खुदाया मेरे। ये वतन मेरे वतन, ये वतन मेरे वतन। Thank you. Thank you, Ashna Sunil. Now let's enjoy a beautiful performance by our kids of UKG. कौन करेगा देश की सेवा हम भाई हम, कौन चलेगा सच्चा रास्ता हम भाई हम, कौन करेगा देश की सेवा हम भाई हम, कौन चलेगा सच्चा रास्ता हम भाई हम, कौन बोले मीठी भाषा हम भाई हम, कौन बोले मीठी भाषा हम भाई हम, कौन बनेगा अच्छा
performance. Freedom is never dear at any price. It is the bread of life. What would a man not pay for it? Mahatma Gandhi. Yes, words have power. So next we have a speech. So I would like to call Renisha of class 10 with a speech. Good morning to all. Today, we all are here to acknowledge our privilege to be born in free India and to celebrate 75th Independence Day of our country. We need to ask to those who born before 1947 to know the paths of being vanquished under the colonial rule. Those days was indeed a Herculean task for the Indians to fight against the powerful giants, the British. Those struggles, those pain they had, which must not be allowed to fade away from our memory. Hence, independence is not only just a freedom, but is paid tribute for the one who fought for it, for the one who held the vision of our country, and for the one who sacrificed themselves for us. Our nation gained respect from the whole world for its democratic route chosen by it. So we can proudly say that India has never revealed any of its country in his 10,000 years of history. In this special occasion, my thoughts turn to the great Mahatma Gandhi, the person behind our struggle, and the patriots who sacrificed themselves for the liberty of our country. We are reminded of the struggle of the patriots who liberated our motherland from the colonial rule. Every Indian are guided a path of self-belief and hopes for a better future. We have a democracy which gives us a person to live in a freely, a respected person for a country. So we are fortunate to live in one due to the sacrifice of our great freedom fighters. There is a big celebration in every year in New Delhi at Rajput. A national anthem was sung before the Prime Minister hoists the flag. And respective salute was given to the flag along with firing of 21 guns. And national anthem was sang and also showers of flowers in via helicopter. Everything was so awesome. Along with all the officers will take part in parades. Such a beautiful moment ever in our life. It will be so awesome. And at the end we cannot merely say that Independence Day is just a freedom. But it is a plethora of an emotion, or it defines a sacrifice, or some kind of feelings of happiness, or we cannot say it, we cannot express it. It shows as an example that someone what can be won by non-violence also, and all the things. And this day shows us a value or cherish the freedom we have today. As a responsible citizen, we should do all our duties perfectly and to progress all together and for the growth and strength or to development of our country. So, keeping the mind the sacrifice of our ancients, we should take a note that we will carve a better future for our motherland. Jai Hind. Thank you, Renisha. What a wonderful words. Now we have Joanna of class 10 to render a speech. A pleasant good morning to all, respected principal, teachers and all my dear friends. First of all, let me wish you a very happy Independence Day. It's a matter of a great thing to stand in front of you to say a words of thankfulness and gratitude on this Independence Day. So let me begin with a quote. Think about the past and to resolve to build over a better future of our country. This was the date on 1947 we got independence, freedom from the British rule. And we are celebrating the 75th Independence Day. We are fortunate to have forefathers who provides us a land of peace. A peaceful land that we are living is only the sacrifice of them. They are Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many others who devoted their lives for the service of our nation. India is the largest democracy of the world. We are one of the emerging economies, especially developing in the field of technologies, education, sports and many other fields, which couldn't be possible without our freedom. So not to forget about the freedom fighters who fought for us. Now
our time. Yes, it's our time to do something significant for our country. And what we have now and what we all know is only the gift by the forefathers. And have you ever thought or think about ourselves? What will we are giving to our coming generation? Independence is priceless and we must respect it. We must respect the soldiers who fought for us in the borders, for our country, for our nation. So after talking about this, some of the questions may be arises in your minds. Yes or no? Yes. Like, why do we celebrate Independence Day? Or what is the importance of Independence Day? So let me give you more information about the Independence Day. Thank you, Joanna. Proud moment to be a part of independent India. Next, we have another powerful performance by Harshita Raji of class 7th. Good morning, respected principal, sisters, teachers and all my dear friends. I am Harshita Rajiv. First of all, a happy Independence Day to everyone. 15th August is a very memorable day for us. Yes, on this day, on 1947, we gained our independence from the British government. British government ruled India for more than 200 years. They tortured us and treated us like slaves. Mangal Pandey was the first person to raise his voice against the British government. And how can we forget the great leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Bal Gangadhar Tilak, Bhagat Singh, etc. They sacrificed their life for freedom. Mahatma Gandhi's weapons were truth and non-violence. Let me tell you a quote by Subhash Chandra Bose. Give me your blood, I'll give you freedom. Freedom is that precious. We have to be grateful that we are born in a country where we have the right to speak and live without any fear. India is one of the largest democratic countries in the world. We have unity in diversity. Independence Day is celebrated all over India, despite the difference between the language, lifestyle, religion, etc. It's like we belong in a family where everyone is treated equally. On this day, Prime Minister hoists flag at the Red Fort and he salutes it and the flowers are showered. Parades are organized. Patriotic songs are sung. At this time, I remember a telling by Jawaharlal Nehru. At the strike of midnight, when the world is asleep, India awakens. India is a fast developing country in terms of science, technology, education, agriculture, etc. But India also faces many difficulties like corruption, poverty, child labor, etc. Let me conclude my speech with this poem by Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by the narrow domestic walls, where the mind is led forward by thee, India, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Let us all together work for that heaven of freedom which Rabindranath Tagore visualized half a century before India's independence. Like how we fought against the British government, we can also fight against COVID-19. Let's hope for good. Jai Hind. Thank you, Harshita. Now we have Ashna Khalid of class 10 with a Hindi speech. आदरणीय अध्यापिकों, प्रधानाचार्य और मेरे प्यारे मित्रों, सबको मेरा प्रणाम। मैं अशना कालिद और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने स्वतंत्र दिवस के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। इसके पहले जब मैं अपने हमारे देश की ध्वज को देखा, जब मुझे अपनी स्वतंत्र सेनानियों की याद आ गई, जिसने हमारे देश की आजादी के लिए अपनी जान तक बलिदान दिया। इसके कारण मैं भारतीय होने पर गर्व महसूस करता हूँ।
हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्र दिवस मानता है, क्योंकि इस दिन को हमारे देश आजाद हुआ। हमारे देश को आजादी बनाने के लिए बहुत सारे स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान तक बलिदान दिया। महात्मा गांधी जी भी ने बहुत सारे काम भी किया। 200 साल तक हमारी देश अंग्रेजों की गुलामी थी, क्योंकि अंग्रेजियां हमारे देश में आकर हमारे कैद बनाया। इसके कारण हमारे देशवासियों में बहुत दुख और प्रयास अनुभव करना पड़ा। ये सारी दुख को दूर करने के लिए हमारी स्वतंत्र सेनानियों ने और हमारे नेताओं ने बहुत सारी काम किया। जो आजादी जो अब हम महसूस कर रहा है वो सिर्फ एक ही दिन में नहीं मिला। वे पाने के लिए हमारे नेताओं ने बहुत कठिन परिश्रम किया। इस अवसर पर मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ। मैं अपनी शिक्षा के साथ साथ सभी की शिक्षा भी करेंगी और देश की रक्षा भी करेंगी। मैं अपनी ये बात खत्म करना चाहता हूँ सिर्फ एक बात पर। कुछ भी सोचने पर कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। कोई भी बदलाव आना चाहते हैं तो हमें खुद काम करना पड़ेगा। जय हिंद, धन्यवाद। Thank you, Ashna, for your inspiring words towards our leaders and the nation. Now, here comes Pritik of Class 8 with another powerful Hindi speech. नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षक और मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्यारे भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए थे। आज हमारे देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हर कोई भारत माता के नारे लगा रहा है। ये वास्तव में स्वतंत्रता और भूमि के प्रति प्रेम का भावना है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये स्वतंत्रता कठिन है। इनके पीछे दशकों का बलिदान और संघर्ष है। जिस भूमि पर हम सांस लेते हैं वो प्रसिद्ध महापुरुषों के संघर्ष और बलिदानों के कारण है, जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और अन्य। दोस्तों, स्वतंत्रता एक उपहार है। ये हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों, रातों की नींद, क्रूर यातनाओं और संघर्षों का उपहार है। इतिहास एक खुला अध्याय है। ये हमें इस भूमि के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में बताता है। ये स्वतंत्रता हमारे महान नेता गांधी जी के कारण है। वो लोगों के अधिकारों के लिए चट्टान की तरह खड़े थे। उन्हें कई बार जेल में डाला गया। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। दोस्तों, हम एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। हमारे पास एक बड़ी बहादुर सेना है। हमारे सीमाएं सुरक्षित है और हमारे दुश्मन हमसे डरते हैं। इसलिए हमें समस्याओं को देखना और तुरंत उनका समाधान खोजने की जरूरत है। हमें एकजुट होना होगा, जैसा कि हमारे महान नेता गांधी जी ने कहा। हमारे भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करें। इसलिए हमें एक बेहतर कल के लिए अपने आज को सुधारना होगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Ritik, for your words about freedom fighters and their sacrifice. That was a great performance by our friends to make us aware of the history of our country. The moment of body is a rhythmic way with patriotism. Now we have Harshida and Pranida with the dance performance. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ
performance of patriotism. And we have another dance performance by Joanna, Jeffy and Renisha. Wow, incredible. The young dancers really held everyone captive. A fine work of rapid moving steps. Thank you friends for your great contribution. Now, I welcome you all to the much awaited event. The little bundles of St. Maria are here with fancy dress of great Indian leaders. They are Ruhan of UKG, Rizin of LKG, Naviga Naveen of UKG, Shinza of LKG, Shabian Chaiju of Class 1, Naidika Raj and Shanbia of Class 2. मैं भगत सिंह सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना जोर की तरफ बाजवे का दिल में इंगिरो जिंदाबाद नमस्ते I am Subhash Chandra Bose. If it is not given, it must be taken. To me that I will give you freedom. I love India. Jai Hind. मैं हूँ झांसी की रानी, मेरा नाम रश्मि बाई, मेरी झांसी मैं दे दूंगी. Namaste, I'm Lani Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi. We fight our freedom. I love my India. Jai Hind. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीता My life is my message. तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान. Good morning everyone. I am Naidik Raj, studying in 2nd standard A. I have chosen to represent that leader who was a man of simplicity and his dedication to his profession and love for children. It's always inspiration to everyone. And he made in young very proud. And he was the 11th President of India during 2002 to 2007. Yes, now you got it. I am APJ
APJ Abdul Kalam. I was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. I was the aerospace scientist. I worked as an aerospace engineer in ISRO and DRDO. People also called me as a missile man of India. I was aided as a scientist from popular missiles such as Agni, Prithvi, Agas and Trishul. I played very important role in India's Pokhran 2 nuclear test in 1988. I loved by everyone. People honored me many awards such as Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and many more. Children, do you know how I achieved all this milestone? I always believe myself, and if you remember 5 things that is you did every day, that is you are the best. You can do it. God is with you. Today is your day. You are the winner. Remember these 5 things, and if you did it every day, we can change the world. So now end my words with one inspirational quote for all of you. If you want to shine like a sun, first you burn like a sun. Remember, your first teacher is your last mistake. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Respected teachers and my dear friends, I am Tanviya. Today, I would like to do a fancy dress performance. That was our Little Charms with Little Lovely performance. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है।
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा हरी बारी नीले आसमां के तले जय हो शब्बेगम जय हो गामे दे जय हो हाले दे जय हो मैं तू भी जय हो आला आला जय हो आला आला जय हो आला आला जय हो Here comes to the end of the program. Hope you all have enjoyed. Now I call upon Alan K. Prashant of class 10 for vote of thanks. Respected Principal Sister Catherine, Manager Sister Mariama, Vice Principal Sister Shirley, Administrator Sister Lally, teachers, non-teaching staff, parents and all my dear friends. Good morning and a happy Independence Day. It's my great privilege to propose a vote of thanks on behalf of whole team. First, I would like to extend my sincere gratitude to our beloved Principal Sister Catherine. She is the backbone of our school. Next, I would like to thank all sisters, teachers, non-teaching staff, parents who took the initiative to make this program a great successful. Last but not the least, let me thank all our participants of this program for making this event a great successful. Without you, this event would not have become so successful. Once again, thank you all. Thank you and Jai Hind.